This program is powered by MLBD Research and Resource Foundation, initiated by Motilal Banarsidass Publishing House and Good Weather. नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस स्पेशल एंटरप्राइज स्पेशल प्रोग्राम सीकिंग द एनलाइटनमेंट में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा के इस कार्यक्रम को लेकर हम हर रविवार सायंकाल 6 बजे आपके समक्ष उपस्थित होते हैं और इस ज्ञान यज्ञ में आहुति देने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह आज भी हैं, नई दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू के सीनियर प्रोफेसर और संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज के अभूतपूर्व विद्वान प्रोफेसर रामनाथ जी झा। साथ ही हमारे साथ होंगे ऋषिकेश से गीता उपनिषद की अध्येता और अध्यापिका आचार्य राधा जी। मुंबई से हमें ज्वाइन कर रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के सीनियर एडिटर हुए एमिनेंट कॉलमनिस्ट श्रीमान विठल जी नाडकर्नी। यूएसए से हमें ज्वाइन करेंगे भारतीय मूल के इन दिनों अमेरिका रहने वाले एमिनेंट साइंटिस्ट मशहूर वैज्ञानिक प्रोफेसर श्रीमान बलराम सिंह जी। यूएसए से ही हमें ज्वाइन करेंगे भारतीय मूल के ही हैं और एमिनेंट प्रोफेसर हैं, प्रख्यात प्राध्यापक हैं श्रीमान अनिल जी भाटे। और साथ ही बेंगलुरु से हमें ज्वाइन करेंगे प्रोफेसर श्रीराम जी दर्भा और भारतीय प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ अधिकारी रही पुणे से हमें ज्वाइन कर रही हैं श्रीमती लीना जी मेहंदले। हम हमारे एस्टीम्ड पैनलिस्ट के पास चलें इससे पहले आज के एपिसोड की एक संक्षिप्त भावभूमि आपके समक्ष रख देना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा को हम गीता उपनिषद के जरिए, गीता उपनिषद के माध्यम से समझने समझाने का काम करते हैं और आज जो विवेचित होने वाले श्लोक हैं वो हैं चैप्टर 9 के अध्याय 9 के श्लोकाज 19 to 23, 19 से 23 तक श्लोक अध्याय 9 के आज हम टेकअप करने जा रहे हैं। और आज के इस एपिसोड में भगवान भारतीय ज्ञान परंपरा के अद्भुत और शाश्वत तथ्य और शाश्वत तत्व को और शाश्वत एक जो बात है उसको प्रकट कर रहे हैं, समझा रहे हैं। और वो ये है, तथ्य ये है कि ये जो संसार है, संसार समेत संपूर्ण सृष्टि है, पूरा कॉस्मोस जो है, ये आवागमन के सिद्धांत के ऊपर यानी साइक्लिक सिस्टम के ऊपर आधारित है और इसी आधार पर चल रहा है। ये साइंटिफिक बात जो है वो आज गीता के इस एपिसोड में आने वाली है। और साथ ही आज के इस एपिसोड में हम भगवान के द्वारा भोले भक्तों के लिए, जैसे कि कहा जाता है भोले भक्त हमारे देवताओं की पूजा करते हैं, तो वो भी आज समझा रहे हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं उसके बारे में भगवान क्या कह रहे हैं। और हालांकि यूं तो उन्होंने यहां कहा है कि जो भी भक्त श्रद्धा से देवताओं की पूजा करते हैं वो भी मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन इस बारे में आगे भगवान ने कुछ और बातें भी कही हैं जो आज हम हमारे विद्वान पैनलिस्ट से समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान यहां पर क्या वस्तुतः कहना चाह रहे हैं और जो सामान्य जन हैं, सामान्य जो लोग हैं, उनके लिए किस तरह की बात भगवान ने यहां कही है। तो चलिए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत और हमारे एस्टीम्ड पैनलिस्ट के साथ प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और ये जो आज के श्लोक हैं इनकी हमारे विद्वान पैनलिस्ट किस तरह से विवेचना करते हैं, इसलिए हम उनका अब स्वागत करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आचार्य राधा जी, श्रीमान विठल जी नाडकर्नी, श्रीमान प्रोफेसर बलराम सिंह जी, श्रीमती लीना जी मेहंदले और श्रीमान श्रीराम जी दर्भा। आप सबका स्वागत है, नमस्कार, मोस्ट वेलकम। तो जैसे कि प्रोग्राम की रवायत है, ट्रेडिशन है, परंपरा है, आज विवेचित होने वाले जो श्लोक हैं अध्याय 9 के श्लोक संख्या 19 से 23, पहले इनका रिसाइटल होगा, इसके बाद प्रोग्राम की औपचारिक शुरुआत करेंगे। अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः। श्रीभगवानुवाच तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाध्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्
ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं और आचार्य राधा जी के पास चलते हैं। आचार्य जी स्वागत है, नमस्कार। हरिओम। हरिओम। आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। May Lord Shiva bless all our viewers and everybody in the panel. Har Har Mahadev. Okay, so I'm going to start with the 19th verse. And today we have this package of 5 very strong verses here. Every verse has got a beautiful meaning. And ये बहुत भारी भरकम verses है जो आज हम करने वाले हैं. And each and every word should be listened to about in detail and carefully. Now in the 19th verse, I'm going to first talk about Bhagwan, where he says that he gives health through sun. The Shruti says Arogyam Bhaskaradi Chata, means that sun gives us health. What does sun do? Sun dissolves the virus and bacteria and germs and gives growth to the herbs, to the plants, to the medicines. It also helps in giving us health and cure the diseases. Another thing that sun does is that it evaporates the dirty waters, cleans them, it makes them sweet, and then gives us rain, which is again a source of good health around us. Bhagwan says that I am the nectar, which is life, and I am also death. I am Sat, Asat, Nitya, Anitya, source, action, everything. Now this verse is very important. It's a very important part of the Bhagavad Gita. Everybody should mark it here because it says Sat Ja Asat Aham. Now here Bhagwan is saying I am Sat and I am Asat. Now a very big confusion comes here is because in the 16th verse of the 2nd chapter, Bhagwan had mentioned Nasato vidyate bhava, na bhava vidyate satah. Now that verse he had mentioned that you should see Sat different from Asat. Here he is saying that I am Sat and I am also Asat. So what is the confusion that comes here? If we look at the verse or the knowledge through the point of discriminative knowledge, or when we see the knowledge from the point of Viveka, then we will see the division between Sat and Asat. And Bhagwan says that I am Sat, I am your Atma, exist in you as Sat. That is to show that Asat is Prakriti and that is getting destroyed every minute. भाई प्रकृति तो खत्म हो रही है, असत तो खत्म होता जा रहा है, but I am eternal Sat which is there in you. Now in this verse, Bhagwan is saying that I am Sat and also I am Asat. So that means that the destructible part is also me and the non-destructible, the eternal part is also me. Now this verse has come out of faith. The earlier verse which we had seen, Nasato Vidyate Bhava, that had come from a Jnani's point of view for Viveka. Now this verse has come for faith. When it comes to faith, then everything that a bhakta sees, whether he sees the flute, whether he sees the God's hair, whether he sees Bhagwan's features, he sees his feet, he sees the statue, everything is Bhagwan only. So this is about faith. Now when we say Sat is also me and Asat is also me, that means that just like our hair or our nails, which are actually dead, but they are a part of me, right? Similarly, Sat is also Bhagwan, Asat is also Bhagwan. Bhagwan is all the airs, the planets, the sun, the gravity, the rotation, everything in totality is Bhagwan. So it is not going to be wrong
when we say that Sat is also Bhagwan and Asat is also Bhagwan, right? But in order to understand the concept of immorality, when we talk about Atma, there it is talked about the differentiation between Sat and Asat. From a Bhakta's point of view in totality, and from the faith point of view, Sat and Asat both are Bhagwan itself. When we look at it from Prakriti and Ishvara, there also Prakriti is what? It is the power of Ishvara. So it is not indifferent from Ishvara. That is why he says, Satya Asat Aham. In the 20th verse, here we usually people keep attached to the actions of the samsara, and some gain the knowledge of karma phala through Rik, Yajur and Samaveda. Here now Atharva Veda is not mentioned. I'm going to talk about it in the second half of the same program, why Atharva Veda is not mentioned. Now these three Vedas talk about the karma phalas. That is why the three Vedas are mentioned here. And when we talk, when a person knows about the karma phalas, then he gains a desire to go to the heavens. Now he does the yajnas and etc. to gain all the pleasures of the heaven. That is why the word here Traividya has come. And it has come for those people who seek the pleasures of the heaven. They also consume the somarasa. So when they consume the somarasa and do the yajnas for going to the heavens, then all their papa karma gets destroyed. Punya Saundarya Lokam here has come, which means the beautiful world of Lord Indra. So here when we're talking about the beautiful world of Lord Indra, that means you're talking about heaven. Prarthana word has come here, that it is the prayers offered unto God Indra for gaining heavens. Since God Indra is more pious than humans, the word Punyam is used here for Lord God Indra again. In the 21st verse, people seeking heavens do not have any seeking towards Ishvara. Kya hota hai? Let me tell you this in a proper manner. People who are seeking heavens are only for pleasure seeking. They have no interest in moksha or Ishvara. Why? Because for them, going to the heaven is the only ultimate goal. Now, this knowledge of going to heaven comes from the three Vedas, which talks about the karma phalas and the knowledge. And going to the Vedas, there are different mantras which are chanted, different ways of yajnas that are done. Now, here the word gatagatam is used. Means just like the pendulum of a clock, these people go to the heaven and come back. So they do punya, they reach the heaven, then the punya ka phal khatam ho jata hai, फिर they come back again. That is why the word gatagatam has used. तो वो घूमते रहते हैं. They keep doing punya, they reach heaven, then they take the pleasure seeking होता है वहां पर, then the punya phalam gets over. क्योंकि आपका जो भी कर्म आप करेंगे towards gaining that heaven is going to be for a limited period. Now, if the karma is going to be for a limited period, then the result is also going to be for a limited period. Suppose you are doing a yajna to go to heaven, तो यजना करने का जो time duration है उसी का कर्म फल आपको मिलेगा, and for that period of time only you are going to seek the heaven. उसके बाद तो वापस आना ही पड़ेगा. So it is used here gatagat, means going and coming back from the earth. In the 22nd verse, now this is again a milestone of Srimad Bhagavad Gita, which says that Yoga Kshemam Vahami Aham. This is another milestone of the Bhagavad Gita, where Bhagwan is clearly talking about yoga and kshema, and he's saying that I am going to take care of it. What is yoga? Yoga is anything that a bhakta doesn't have. Kshema is protecting what he has. So Bhagwan says that I am going to take care of all your desires, and I also am going to protect whatever you have. Now Bhagwan is talking here about his Ananya Bhakta. Ananya Bhakta is mentioned here. Ananya Bhakta means a Bhakta who is 24 hours one with Bhagwan. So 24 hours when that Bhagwan is there as the goal of this Bhakta, while doing anything, whether he is doing his karmas for living in the samsara also, but if he has a goal of gaining oneness with Ishvara, then he is called an Ananya Bhakta.
सो भगवान सेज कि मैं अपने उस अनन्य भक्त के लिए योगक्षेमम बन करके आता हूं. दैट मीन्स आई एम गोइंग टू गिव हिम व्हाटएवर ही नीड्स and I'm also going to protect what he has. Now, very important question comes here that if Bhagwan gives everything that his bhakta needs, then why are sadhus always without any possessions? क्यों भाई साधु लोग क्यों ऐसे हमें दिखते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है? Why? Because Bhagwan here says that I am going to give my bhakta only what is good for him. I'm not going to give him what is going to be bad for him. अगर मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं इसको एक फरारी देता हूँ, लेकिन इस फरारी चलाने से इसका एक्सीडेंट होने वाला है, तो मैं इसको फरारी नहीं दूंगा. That's a clear statement with an example that I'm giving here. Sadhu bhaktas look like they do not have any possessions because in depth, if we look at their desires, they do not have any desires for any possessions. उनके लिए तो एक कमंडलू ही बहुत है, एक छती बहुत है. So they do not have any major desires. So that is why Bhagwan gives them in whatever they gain pleasure in. भाई उनको लगता है कि ये हमारी possessions जो हैं वो हमारे लिए बोझ बन जाएंगी. We will become a slave of our possessions. That is why they do not seek any more possessions from Bhagwan, and they're very happy in whatever they have, the little that they have. That is why they look like that. Now Bhagwan here says that I am available 24 hours there for my Jnani Bhakta, whatever he desires. But that doesn't mean that any other Bhakta, whatever he desires, I will not give that. No, it only means that my Jnani Bhakta is a little special for me. Why? Because there is no difference between Bhagwan and his Jnani Bhakta. I'll take the next verse in the next round, Sharma ji. बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है. तो नाडकर्णी साहब के पास चलते हैं. नाडकर्णी साहब स्वागत है, नमस्कार. नमस्कार, नमस्कार. Already we have invoked Shivji ki kripa, and I am going to bow my head in reverence to the great Lord Mahadev ji, who also gives us ecstasy along with illumination. Now, as Acharya ji had so lucidly explained, the 19th verse talks about I radiating heat as the sun, and I withholding the rain and also sending it forth. And also the Lord describing himself as immortality as well as death personified. Also as Prakriti and Purusha, which is also the essence of the great Lord Mahadeva, where he is also father and mother of this universe. Now, contrast this beautiful verse with that frightening verse where the Lord says, I am time come to consume the worlds, which was invoked when the first atomic bomb was detonated upon the planet. Here, the Lord is making a more encompassing verse to reassure the devotee. He's not trying to sort of tell him what can happen when the Lord manifests himself as an annihilator or a terminator, if you will. Here in the 19th verse, it is not really about a dualistic polarity that we tend to associate sometimes with the East and the Orient, yin and yang and life and death. It's not. It is rather a complete totality. It's not opposing categories of two classes which are sought to be portrayed here. And Sharma ji, I would like to invoke an experience I had in the deserts of Rajasthan when this came to me actually, where we were watching the total eclipse of the sun. Here we were at a village called Andhiari, and the sun was bright and completely shining, and everything was well upon this earth. And slowly a shadow starts moving on the face of the earth, and within few seconds completely erases all the darkness, and the birds start, getting panicky, and then they fly off into the khejri bushes. There is a perceptible drop in temperature. But frightening as this might seem, that frightened older civilizations, the death of the sun as it has been described sometimes in, say, the Mayan or Mesoamerican civilizations,
again the shadow goes back, and then brightness is upon the earth and everything is well, and the sun is in the heavens. So it is this kind of totality that is sought to be conveyed to the bhakta. Now, those who are inclined to taking a particular path, they are also assured. Say, if you say that a particular kriya se, rites से, ritual से, मंत्र से, तंत्र से ये सिद्धि या ये enlightenment या फल प्राप्त किए जा सकते हैं, तो so be it, because he is also not a destroyer of dharma or technique in that sense. In fact, he goes on to say that even those that do it from not accepted or socially unsanctioned paths also worship me, though through wrong methods or wrong visuals. That is also the generosity of the verses that we are dealing with. Then, of course, Acharya talked about the pendulum, of going up and down and, amassing merit, going up to enjoy Indralokas and its, earthly pleasures or heavenly pleasures. And then once your quota, if I may say, of the good deeds or punya is over, then you come back again and start again. And so the cycle of births and lives is sought to be explained also as a mahayajna of actions which have predictable or inevitable consequences. So if you do wrong actions, you are going to get wrong consequences, and uska aapko bhugatna padega, or you have to give an account of what you've done. So in what is the message then? He says that those who always think of me, engage in exclusive devotion to me, to them whose minds are always absorbed in me, I provide what they lack and preserve what they already have. Now, on a lighter note, this Yogakshema Vahamyam, ye jo hai, this line has been appropriated by the Life Insurance Corporation of India, which reassures people in face of certain death that, oh, don't worry, you pay us the premium and then we are going to. And what is the premium, if I may, on a lighter note say, good deeds, good thoughts, good actions. That is what we are putting in our account to draw merit. ये जो LIC का आपने एम्बलम का जो लिया है, इसमें उनका बिल्कुल वही है जो गीता का अर्थ है। और यहाँ गीता ये कहती है कि अप्राप्त की प्राप्ति जो है वो योग है और प्राप्त की रक्षा करना क्षेम है। तो LIC भी वही काम करती है। एब्सोल्युटली। एंड दूसरी एक मजेदार बात जो है, also Satyameva Jayate is the phrase adopted officially by the Indian Republic, and this too is a major commitment to the life of virtue that is officially made, that it is truth alone. ये बात चली जाएगी लंबी, लेकिन फिर भी यहाँ आपने जब छेड़ ही दी है चर्चा, तो हम यही इंटरजेक्शन कर लेते हैं। आपने सत्यमेव जयते की बात लिखी है। इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में सत्यानाशी की, सत्यानाश होने की एक गाली है जो पाकिस्तान में भी आपको सेम रूप से मिलेगी। ठीक है, पाकिस्तानी चाहे सब कुछ नया सीख गए हों, लेकिन सत्यानाश जो है वो अभी भूले नहीं हो। आज भी उनकी बातचीत में सत्यानाश की गाली है एक तरह से। हमारे यहाँ सत्य का नाश जो है उसको एक तरह से बहुत बड़ी चीज माना जाता है, सबसे बड़ी गाली है ये किसी के लिए। यानी यूरोपियन वर्ल्ड में अननेम्ड यदि बरियल का जो सबसे बड़ी सजा है वो हमारे यहां सत्य का नाश होने की सजा है। ये इक्विवेलेंट है। हाँ जी, this is something Subhash ji, we talked in our last program where I was hesitating from taking the name of that pure country. That is also a paradox. A paradox that you incorporate purity in your... नहीं, ये देखिए आपकी इज्जत है इसमें आपकी इज्जत है। वो अरेबिक रिलीजन के ऊपर उन्होंने बनाया है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, यहां तक ठीक है। yes. लेकिन अरेबिक लैंग्वेज में पाक शब्द नहीं है। दैट इज इन ऑनर ऑफ इंडिया, दैट इज इन ऑनर ऑफ योर संस्कृत।
Now, as you are talking, you are raising these beautiful points. The word pak is also used in Sanskrit. Also, no, it's originally Sanskrit. In conjunction with time. Time cooks all things is the great Mahavakya of Mahabharat. So that is why we must realize that we are not here forever. As Acharya ji said, that moment you are dead, then a new cycle begins of, trials and tribulations, if you will. So when you are not here forever, you better make sure that your actions are ones that are likely to be recalled with affection and benediction rather than the opposite. This is also implied. Now I'm also inclined to talk about. There is this Trivida Bhakti and also the three Kriyas, the three Vedas. But I'm also I'm tempted to involve mysticism, intellectualism, and ritualism. Beyond that is this bhakti, total surrender, that is being espoused here, thinking always of the Lord, singing His graces. We talked about kirtan and bhajan last time. It is that which is the easiest in this Kali Yuga, is the underlying message. Because, restraint of your senses, being on the narrow razor's edge of good conduct can be challenging. But instead, when you are immersed emotionally in a bhakti mode with the Lord, then the dangers of all this are likely not to touch you. This is why we don't get this apophatic theology, which you see a lot in Western canons, where the divine is, invoked with negatives. Perfect goodness of God, by contrast, is cataphatic theology, where God is approached with affirmations or positive statements about what God is. And you see the most beautiful examples of cataphatic theology, to use a technical term, in the verses that we are looking at. And I shall wait my turn for additional inputs depending on what my learned colleagues have to offer. Thank you. फैंटास्टिक। तो चलते हैं प्रोफेसर बलराम सिंह साहब के पास में। स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जी, यहाँ पे जैसे ये हमारा पूरा प्रोग्राम चल रहा है सीरीज में, मेरा थोड़ा सा भेद है, थोड़ा सा ही भेद है जो मैं जिस तरह से इसको देखता हूँ। और मुझे लगता है हर श्लोक जब हम पढ़ते हैं तो इसकी हमारे विचार की पुष्टि होती है। ये पुष्टि ये होती है कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अपना उदाहरण देके आपको एक मिरर दिखाते हैं कि ये हैं आप। तो यहाँ पे जो भी ये बातें हो रही हैं कि हम जाते हैं आते हैं, हमारी पूजा करो, हमारे अंदर ही सब कुछ है, हम आपके अंदर, राधा जी ने अभी बताया कि सत असत सब आपके अंदर ही है, इसका मतलब ईश्वर आपके अंदर ही है। तो वो हमको याद दिलाते हैं कि आप अपने में ध्यान दो। एक उन्होंने अपना उदाहरण बताया है कि वो भगवान कृष्ण है, वो एक संपूर्ण है, पूरी तरह से उनमें कोई दोष नहीं है, सारा कुछ उसमें है। उनको देखकर, जैसे मैं अपने विद्यार्थियों को साइंस का पाठ देता हूं तो मैं उनको करके दिखाता हूं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो मेरी याद करते रहें कि बलराम सिंह ने क्या किया था, बल्कि उसके आधार पे वो स्वयं करें और स्वयं ही आगे बढ़ पाएंगे। तो भगवान कृष्ण एक वैज्ञानिक, जैसे आपने कहा ये बड़ी वैज्ञानिक विधि है, यहाँ पे उन्होंने वैज्ञानिक ढंग से अर्जुन को ये दिखाया कि देखो ऐसे कर सकते हो, हम ऐसे हैं, लेकिन आपके अंदर है, जैसे राधा जी ने कहा ये सारा कुछ आपके अंदर है, अच्छाई भी है, बुराई भी है, झूठ भी है, सत्य भी है, क्योंकि ऐसा है। और वो एक विधा है जो कि कर्म के अनुसार व्यक्ति आगे बढ़ता है। जब कर्म करते करते परिपक्व हो जाता है तो उसके एक स्तर पे पहुंच जाता है। बीच में उसको स्वर्ग और मृत्यु लोक आने का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि कोई गलत काम कर रहा है। अभी बहुत सारे लोग, आई थिंक आई फॉरगेट, मे बी इट वाज योगानंद, परमहंस योगानंद,
I think, said in his autobiography that he does not want moksha, he wants to come back and serve people. That itself is a very a great thing for people to think. कोई जरूरी नहीं कि लोग enjoyment के लिए आना चाहते हैं, वो कष्ट उठाने भी आना चाहते हैं, उस कष्ट में उनको शांति मिलती है, कर्तव्य करने में शांति मिलती है. तो मुझे ऐसा लगता है कि I find this is a very scientific approach to teach somebody, just like our acharyas, Acharya Raadha ji is here, and our acharyas, many acharyas, they showed it according to what they're talking about, and so that the disciples or followers can follow exactly like that and test themselves. Of course, I have had students, some of them they shine, they see it first time and do it. Some of them make several mistakes, but eventually they get somewhere. So it is the difference that we see in people. That is what I think we're seeing. So ultimately, human being as an example, the reality is that this is a description of the nature. The entire nature, entire universe is being described. We as human beings have our panch karmendriya, panch jnanendriya, and that we are the one who are accepting it, understanding it according to us. But the reality is the nature of everything is in there. I'm not very sure. I agree with Nadkarni ji. I think he said something, qualities yin and yang, that people in the Eastern world try to say. There is nothing wrong with that, Nadkarni ji. The only thing is that it is status where people are. They take that example and understand that. That doesn't mean that they stuck. Some of the times I find problem that we learn something and then we're stuck with that. No, we are supposed to go over. So yin and yang is a good way, just like we had proton and electron. We learn science, but we also understand that there is the origin of electron and proton. And if we want to first understand what is electron proton, then we can go further and say, okay, this is where it is coming from. This is not the end of it. And we are finding all kind of problems with that. But that's the nature of the way we understand, because we have the senses, and senses always teach us to distinguish. We have always learned relative things. Now, according to Vedas, again, it's in the second, in 9.20, talking about Trey Vidya, that Vidya again is of the people who were able to practice it. And it is for us to practice. If we do not practice it, some people like Radha ji has an opportunity to practice it, exactly the Vedas knowledge, and then you teach to others. That most others just we read it and then we try to listen to whatever Radha ji says or other very learned people say, and we say, okay, this is what we understand. But that understanding is not an understanding. That may be a satisfaction for the moment, but the reality is that your life, you are here to practice and imbibe and experience and then move forward. So I think that is a very important lesson from there. I also think that this Swarg Lok and Mrityu Lok that has been described here, it is to say, I think it has been said very nicely by Radha ji as well as Nadkarni ji, that you have these things, and if you are going to want Swarg, then it eventually will be you will have to spend it. Whatever punyas you have, it has to be spent, because you want something. Whenever we want something, we have to pay for it. In the business, I think Shriram Darbha ji probably will talk about it. In the business, and then if you want something, you have to pay for it, and that's how the business runs. So I think this is a good place to have the punyas that you have to. I think I'm developing a theory how the children are born and who chooses who. That I used to think that parents choose children when they are going to be born, but now I understand from Indian philosophy, it is children with their karma currency. They are the one who choose the parents. So it depends on how much they have and the kind of parent they will get. If you have only one child, that means the child has a lot of karma currency. If you have 15 of them, they have very little karma currency. Don't abuse us. Don't abuse us. But the interesting thing is, and I think this is very important thing I was talking, even if you are thinking of other than Bhagwan Krishna or yours, Atma Chintan,
that is okay, because eventually you're going to come back. That's what he's saying. Eventually they're going to come back, because you go around and run and then come back and say, oh, it is here. Actually, because you can do all that. So, but important point here is yog chem. I'm not sure if I agree with the yog chem means, to protect and all that. Yog means to combine. Chem means something that you did not have. You are missing. You want it. So something that you have missing is need to be combined. That means it need to be an effort. So it maybe I'm glad that Dr. Jha is not here, so I can say whatever I want to say. But but that's my understanding is no. I think Shriram Darbha is going to say no. That's not the case. He's going to take his place. But yog shem basically means apurti. You are missing, something is missing in you, and then you try to combine it. That's why the yoga word comes in there. Something that is good for you, you're looking for it, but then you need to combine. And I want to say this, that it's not just like, you do somebody's worship and you're going to get it, but you really need to make an effort, just like yoga. That's why Bhagwan Krishna is known as Yogeshwar. He did not ever deviate from that yoga. The yoga is something that we all have to practice to get there. So yog shem, really here it means you have to make an effort. It's just not just given to you. And the last point I want to make is, before that I want to make this, the point is that, this Vedas, many times people say Shruti, and it is Shruti. I looked up the word Shruti. It means, you listen to outside, but you also listen to inside. There is a lot of vibrations going on. The Shruti is like sound vibration, but there are many other vibrations that our ears don't listen. But you look at somebody's body language, there is no listening to it, but from the body language you acquire certain things. The same thing is going on in our own self. There are a lot of activities going on, and sometimes what is known as in English epiphany. I don't know what they will call in Hindi. But in epiphany, it means suddenly something appears that you were not working on this, you were not making a formula, you were not writing an equation, but suddenly something you realize. What is that? That is also Shruti. That's Shruti of ourselves. There's a lot of information, almost in Anant, infinite information, and the timing and everything is happening. And that sometimes materializes, and then it shows up to you. So Shruti also means to listen to yourself, not just to listen to outside. And I feel that our rishis and sages who came up with the Vedic knowledge, they really listen to themselves. So Atma Bodh, that also goes back to the Atma. And finally, when we talk about other devatas and other gods, other ideals, and then today is, of course, we have the Mahashivratri. Mahashivratri, there are Brahma, Vishnu, Mahesh, the Trimurtis that we have, the Trinities. But before that, I think was Ardhanarishwar. Radha ji can correct me. Ardhanarishwar, before Ardhanarishwar, there was this Adi Purush. So Bhagwan Shankar is given that that status of Adi Purush, that became Ardhanarishwar, and then from there came Brahma, Vishnu, Mahesh. So we should always remember the origin of everything is Shiva, and that Shiva is what we celebrate. We do not celebrate Vishnu Ratri, we do not celebrate Brahma Ratri, but we celebrate Mahashivratri. And because the Shiv is the origin of it, and that is to imbibe this whole idea, is this one particular day has been put so that we remember that all the vibrations, Damaru and his Nritya. Damaru is the sound, Nritya is all the activities that really comes because of that. So this is reminder, great science actually, that Shiva is the origin of everything. And if all we have to do is, with all this knowledge, we just try to get there, understand that, and practice it. Thank you. जी, तो if fellow panelists agree, because hence Leena ji has some domestic problem, domestic obligation basically, not problem. So can we give her a chance?
to speak Yes, first. Okay. And Namaskar. And I will not be coming for the second round, so because I will have to leave at 7 o'clock. But thank you very much for this giving me a chance out of turn, sort of. मैं हिंदी में बात करूंगी ज्यादातर. प्लीज गो अहेड. ये तो हमारा तो बेसिकली तो हिंदी में ही बात करने का है, लेकिन ये तो भाई अब ठीक है, जिसको जैसी सुविधा है वैसी बात कर सकते हैं. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. बाइलिंगुअल है, जिसके साथ जो कंफर्टेबल है जी. हाँ, आप हिंदुस्तानी में भी बात कर सकते हैं, इसमें उर्दू का भी यदि मिश्रण हो सकता है, नो प्रॉब्लम, हमें कोई. हाँ, मतलब जो भी नेचुरली हो जाता है, उसमें इंग्लिश भी आ सकती है कुछ. बिल्कुल. तो जो यहाँ पर जो बहुत खूबसूरत एक बात कही गई है कि जैसे यहाँ राधा आचार्य जी ने भी बताया कि यहाँ पर अमृत मृत्यु, तपामी और वर्षामी, मतलब मैं तपाता भी हूँ और मैं वर्षा करके आपको आपूर्ति करके आपको ठंडक भी पहुंचाता हूँ. विसृजामी, और दोबारा मैं क्रिएट भी करता हूँ. तो ये जो निरंतर एक चक्राकार जो गति चलती है, उसका यहाँ पर बखान किया है. और वही चक्राकार गति हमारे मृत्यु और जन्म और मृत्यु में भी देखने को मिलती है. इसी के लिए गतागतम शब्द का प्रयोग किया है. लेकिन यहाँ जो एक शब्द है जो थोड़ा सा अबूझ रह जाता है, क्योंकि हम जन्म और मृत्यु को तो हम बहुत आसानी से समझ लेते हैं क्योंकि उसको हम देखते हैं, लेकिन अमृत और मृत्यु को समझना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है. क्योंकि जन्म का अर्थ अमृत नहीं है और मृत्यु का अर्थ भी अमृत नहीं है. तो फिर ये अमृत है क्या चीज? और जो कहा गया कि स्वर्ग लोक के अनंत तरह के नाना तरह के भोग ये व्यक्ति भोग सकता है, जो कि उस कामना से या उस फल की अपेक्षा से यज्ञ करता है, या तीनों वेदों में वर्णित जो भी क्रियाकर्म बताए गए हैं, क्रियाकलाप बताए गए हैं, उनको करता है. तो ये स्वर्ग और अमृत ये भी दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि स्वर्ग का पुण्य भी क्षीण हो जाता है, जबकि अमृत जो है वो क्षीण होने वाला नहीं है. तो एक ये बहुत गूढ़ शब्द हमारे यहाँ है कि अमृत वो है क्या. लेकिन पहले मैं इस पे आती हूँ कि क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विशंति, अर्थात जो व्यक्ति वेदों में जो क्रिया बताई गई है, प्रोसीजर्स बताए गए हैं, यज्ञ कर्म बताए गए हैं, उनको जो करते हैं वो फल प्राप्ति की इच्छा से करते हैं. तो यहाँ हम ये देखते हैं कि जब हम अपने वेदों की अलग अलग प्रार्थनाएं पढ़ते हैं तो हम उनको निश्चित रूप से दो भागों में हम उनको विभाजित कर सकते हैं. उनकी फलश्रुति को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं. एक प्रकार की फलश्रुति है जो यज्ञ में प्रार्थना जो की जाती है, उसमें ये कहा जाता है कि हमें यह मिले, हमें वह मिले, हमें धन मिले, ऐश्वर्य मिले, अच्छा राष्ट्र मिले, अच्छा परिवेश मिले, हमारे पास पराक्रमी पुरुष हो, हमारे पास सुवर्ण हो, हमारे पास अश्व हो, हमारे पास समृद्धि हो, हमारे पास सामर्थ्य हो, हमारे पास बलवान पुत्र हो, वगैरह वगैरह, धन धान्य हो इत्यादि. मतलब जो कि जिसको हम वर्ल्डली ये हम कहेंगे सारा, ये भी हमें यज्ञ कर्मों में मांगा गया है. तो ऐसे कई प्रोसीजर्स हैं यज्ञों में, कई ऐसे कर्म बताए गए हैं जिनको करने से आप इनको प्राप्त कर लेते हैं. और इन्हीं की जो एक अत्युच्च परिणति मानी जाएगी वह है स्वर्ग का सुख. लेकिन ये सारा जो है ये अमृतत्व का बोध आपको नहीं दे सकता, क्योंकि ये एक बार अगर हम इसका स्वाद हम एक बार चख लें, दोबारा चख लें, तिबारा चख लें, फिर उससे एक ऊब हो जाती है, एक वितृष्णा हो जाती है. कोई भी संसार का सुख ऐसा नहीं है कि जिस सुख में आप निरंतर डूबे रह सकते हैं. लेकिन
जो भगवत भक्ति का जो सुख है, और इसीलिए जो ज्ञान परंपरा है उसकी अपेक्षा भक्ति को भगवान ने 12वें अध्याय में हम देखते हैं कि उसको अधिक श्रेष्ठ बताया गया है। और अर्जुन से ये कहा कि तुमने चाहे जितनी पढ़ाई की हो, वेद अध्ययन किया हो, पराक्रम दिखाया हो, ज्ञान संचय किया हो, इन सबसे अधिक तुम मेरे लिए इसलिए प्रिय हो कि तुम मेरे अनन्य भक्त हो। तो भक्ति को ऊपर की श्रेणी में रखा गया है। उसका कारण ही यह है कि हमें यज्ञ कर्मों से अलग अलग फल प्राप्ति तो हो सकती है, लेकिन जो एक दूसरे तरह का भी विधान हमारे सारे वेदों में बताया गया है, जहाँ पर जो फल प्राप्ति है वो फल प्राप्ति ही हमारे ज्ञान को बढ़ाने वाली, हमारे भक्ति को बढ़ाने वाली, और ऋग्वेद में तो एक पूरा का पूरा श्रद्धा सूक्त ही है कि हमारी श्रद्धा बढ़ती रहे। तो ये जो एक जिसको हम फिजिकल वर्ल्ड कहेंगे या वर्ल्डली एसेट्स कहेंगे, उसकी अपेक्षा भिन्न एक स्पिरिचुअल एसेट्स की भी बात वेदों में कही गई है। उनका पुण्य क्षय नहीं होता है, क्योंकि वहां पर हम किसी भी सांपत्तिक या सुख की लालसा से वो हम इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। तो वह जो पुण्य है उसका नाश नहीं होगा, और जो अमृत की बात कही गई है वो उस प्रकार के पुण्य के लिए कही गई है, ऐसा मुझे लगता है। और उस पुण्य का ही प्रतिफल ये होता है कि चूंकि आपने भगवान की भक्ति की, तो अब ये भगवान की जिम्मेदारी हो गई कि आपको वो खुद एक ठीक मार्ग पर ले जाए, आपके योगक्षेम को वो वहन करे, आपको वो बिना कारण, या जिसको हम कहते हैं कि एक आत्यंतिक दुख में, क्लेश में, कष्ट में वो नहीं रहने देगा। और ये मैंने कई बार स्वयं भी अनुभूत किया है, इसको मैंने देखा है, इसकी अनुभूति की है कि कोई बहुत ही कष्ट का प्रसंग जब आ जाता है और उस समय अचानक से कोई न कोई हल मुझे प्राप्त हो जाता है, और मैं सोचती हूँ कि ऐसा मैंने क्या किया था कि ये हल अपने आप मेरे पास आ गया। तो तब मुझे इस पंक्ति का स्मरण हो जाता है, और खास करके मेरे पिताजी ऐसे कई उदाहरण बताया करते थे कि जब उनके जीवन में इस प्रकार के कई प्रसंग आए, जब उन्हें लगा, और ये जो योगक्षेमम वहाम्यहम, इसका वो बहुत ही, इस वाक्य का बहुत ही अधिक सम्मान करते थे और बहुत उदाहरण भी देते थे। मुझे लगता है मेरे पास उतने उदाहरण शायद नहीं है, लेकिन ये एक बहुत मतलब इससे संबंधित एक छोटी सी कथानक कह करके मैं अपनी बात पूरी करूंगी। ये विवेकानंद और स्वामी परमहंस जी, इनका जब वार्तालाप हो रहा था, और एक बार विवेकानंद ऐसी परिस्थिति में फंस गए कि उन्हें लगा कि उनको घर चलाने की जिम्मेदारी है और वो उसको नहीं निभा पा रहे हैं क्योंकि धनार्जन का कोई साधन नहीं है। तो वो स्वामी के पास गए, परमहंस जी के पास, और कहा कि ये विपदा है। तो परमहंस जी ने कहा ठीक है, रात को मैं तुम्हें काली का दर्शन करा देता हूँ, उससे जो मांगना है मांग लेना। अब होता यह है कि विवेकानंद जी जो हैं वो काली का दर्शन तो करते हैं लेकिन उनसे कुछ मांगते नहीं, और 3 बार ये बात, 3 रातों में ये बात दोहराई जाती है। तो फिर परमहंस विवेकानंद से कहते हैं कोई चिंता मत करो, काली ने मुझे स्वयं आकर के कहा कि इसकी चिंता मैं किया करूंगी, अब ये अपनी चिंता करना छोड़ दे। तो ये जो कथानक जो हमें विवेकानंद के जीवनी में भी ये पढ़ने को मिलती है, ये एक बहुत अच्छा मुझे लगता है कि योगक्षेमम वहाम्यहम का उदाहरण जो कि उनके लिए दिया गया, और अपने लाइफ में, अपने जीवन में भी मैंने इसको कई बार अनुभव किया है कि कोई भी बहुत अति कष्ट का प्रसंग हो, उससे अपने आप, जिसको कहते हैं कि स्मूथली निकल जाना, वो हो जाता है। और वो क्यों हुआ? तो किसी न किसी ने किसी न किसी रूप में वो आकर के उस कष्ट का निवारण किया है। तो और इसीलिए अनन्य भक्ति की बात जो कही है कि और आगे ये भी एक बहुत बड़ी बात कही है कि जो किसी भी देवता को भजो,
वो मेरे ही पास पहुंचेगा। तो भक्ति महत्व की है, आप किस देवता को भजते हैं वो महत्व का नहीं, आपकी भक्ति महत्व की है। अगर आप लड्डू गोपाल को पूछते हैं, उसको आप खाना खिला रहे हैं, उसको नहला रहे हैं, उसको कपड़े पहना रहे हैं, उसको प्यार से सहला रहे हैं, वो एक अलग प्रकार की भक्ति है। और अगर आप रणांगण में खड़े अर्जुन की बात सोचते हैं और उसको किस प्रकार का ज्ञान दिया गया, किस प्रकार की उसके साथ वार्तालाप की गई, किस प्रकार का उसको मोह उसका नष्ट करने के लिए उसको क्या कहा, वो आप कहते हैं और उससे आप प्रभावित होते हैं, उसका आप स्मरण नित्य करते हैं, वो भी एक प्रकार की भक्ति। बट वो अनन्यता उसमें होनी चाहिए, चाहे वो आप सगुण रूप में करें या निर्गुण रूप में करें। जहां पर हम सांख्य योग या ज्ञान योग की बात करते हैं, वहां पर हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ अधूरा सा रह जाता है, उसकी पूर्ति ये जो भक्ति के साथ की गई है, इसका कहीं ना कहीं अमृत जो शब्द यहाँ पर प्रयोग हुआ है, गीता में कई बार प्रयोग हुआ है इसका, वह अमृत जो है वो इस भक्ति से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, ऐसा मुझे लगता है जी। तो बिल्कुल ठीक है। एक बार फिर से महाशिवरात्रि की आपका भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामना, और सबसे क्षमा चाहती हूँ, मैं दूसरे राउंड में मैं हिस्सा नहीं ले पाऊंगी जी। तो बादशाहों को तो बाद में लाएंगे, पहले दरबार साहब को लाते हैं। दरबार साहब नमस्कार। नमस्कार। मैं सोच रहा था आज बादशाह मैं बनूं, बट एनीवे गुड। तो बन लीजिए, चुप कर लेंगे, ऐसी क्या बात करी आपने? वो तो नो प्रॉब्लम, आई थिंक बादशाह के बजाय राजा बन जाएंगे, उसमें क्या बात है? तो भाटे साहब आप जाएंगे पहले? जाती है भाटे साहब आप बात करना चाहेंगे? Go ahead, please go ahead. ठीक है, ओके। And of course, the meaning, as usual, has been already given. And as usual, like I have to bring my unique practical perspective related to both work and life. And that's what I have been doing it, and then I'll continue to do it. That's where some people may get confused that why am I giving mundane examples. So I have clarified in the last episode that it's not that, अभी संस्कृत झाड़ने का थोड़ा बहुत हम भी प्रयास कर सकते हैं, बिकॉज इवन आई कैन स्पीक इन संस्कृत ऑल्सो, बट रोल गिवन टू मी इसको क्लियर कर देते हैं। वो प्रोफेसर बलराम सिंह साहब ने भी कहा है कि इसीलिए जेएनयू कैंपस में अभी इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम आ गई है, ये समाचार हमारे पास आया है, इसलिए झा साहब जुड़ नहीं रहे। दैट इज द प्रॉब्लम। वेरी गुड। No problem. Generally, I am saying, so the kind of background that I come from, two backgrounds. One is, of course, the Sanskriti and then the Sanskrit background. But the occupation has been in the corporate, and hence that I thought, as you asked me, requested me, I have been bringing that kind of anecdotes and then those kind of examples. The second background that I come is the LIC background, which is relevant to today because my father served for around 40 years in the Life Insurance Corporation of India. As children, we have grown up. My first job was also, I was the direct recruit of a business development officer. I also worked in LIC. So in that sense, with this kind of a thing, Yoga Kshemam Vahamyam, and that logo has gone into our lives and souls. Nadkarni sab aapne yaad dilaya, bahut acha. Last 50 years, we have grown with that. So that is there. So that we will try and then understand ये yoga क्या है, क्षेमा क्या है. And also for some time I had been a management consultant between jobs. And my consultancy name was Ardhaved Consulting. And I had a module called Yoga Kshema. And I have done some research on eudaimonia, which is Aristotle's concept, which is well-being. And also my module was Yoga Kshema, integrated well-being. In that sense, I have no argument with BALRAM Singh Ji when he said that it is an integration. Yoga at the end of the day is yunjate iti yoga, that which integrates is yoga. And since we are on the topic, might as well clarify some of the definitions of the yoga as we understand. Yoga within the Bhagavad Gita context is clarified as yoga karmasu kaushalam.
at one point of time. So it is excellence in action is yoga. Whatever action, whatever project that we do, whichever action that we take, the kaushalam is the skill, the skillful action, and excellence in action is yoga. That is one perspective which is given, because Sanskrit is such a rich language. The context also changes from the dhatu and then the शब्द का बहुत सारे अर्थ होते हैं. वाच्यार्थ भी होता है, लक्ष्यार्थ भी होता है. We have discussed earlier. And yoga and samatvam yoga uchyate. The balance, like Balram Singh ji was telling again, is that samatvam yoga uchyate. The balance, like Leena ji was also talking about. So the siddha siddhyo samo bhutva samatvam yoga uchyate. That's what he said in another place. So the holistic work-life balance has been my PhD thesis. So the holistic work and then life is the balance. That is that kind of a balance. Even if we don't talk about a highest form of profound philosophy of Stita Prajnatva and all, at some point of time Arjuna had asked, and then Lord Krishna has given the qualities of a Stita Prajna and then the yogi. And Yogi Bhava, he has said. Yodha Bhava, he said at one place, and then Yogi Bhava, he said. And the third yoga definition we understand, which we discussed, is the Patanjali, is the yoga chitta vritti nirodha. So these are the things. And in that context, if we understand, there is no debate. It is, we can also have an integrated understanding of the well-being. So then what is the purpose of the human life as per the Sanatan Dharma? The Sanatan Dharma is all-inclusive and the most secular, as I have said several times, and then we have discussed several times, and all of us know it. We may not completely believe in it and then maybe practicing it or putting in practice or apply in our daily lives. But all of us know, and then at least learned people about Sanatan Dharma, we know that it is unlike the Abrahamic religions. Now coming to the concept of the heaven and then the hell, because he is saying that Kshine Punye Martyalokam Vishanti. That's what he is saying. So this Kshine Punya is that, first of all, what is the purpose of the human life? The human life is to achieve the Purusharthas as per the Dharma. The Dharma Vihita Karma, that's what he is saying here also, Treyi Dharma. What did he say? Treyi Dharma Manupraparna Gadagatam Kama Kama Labante, and he is also saying Yajante Sradhayan Vitaha, Yajante Vidhipurvakam. That's what he is saying in 23. Vidhipurvaka, whatever is the Vidhi which is prescribed, as Shastra Vidhinushrujya. That's what he says. As per the Shastras that we have, as per the Vedas, the three Vedas he is saying is because that also I have tried to clarify in the previous. Actually, when it comes to the Vidya, the knowledge part, the conceptual, the philosophy part of it, there are three Vedas. Why they have omitted Atharva Veda is more of a technology and then the application part of it. One is the pure knowledge, the other one is the applied knowledge. And incidentally, Atharva Veda is nothing but is taken from it's an explanation of a technological explanation, the Tantra of the mantra which is of the Rig Veda. So it is an extension of Rig Veda. And hence, always, when Pandit Log or when Rishi Log, Muni Log, they talk about Treyi Veda and Treyi Vidya. Here he is talking about Treyi Dharma. And what is Dharma? See, because, and we also understand what is the purpose of the human life, the Sharira Madhyam Khalu Dharma Sadhanam. That's what we say, that the Sharira we have got is only to do the Dharma Sadhana. And what is the avatar? The concept of avatar is Sishta Rakshana and Dushta Sakshana. And Sharmaji, you already said that Aprapya Vastu Prapti is yoga. And then the Prapta Vastu Rakshana, that which is not there to acquire, that is the yoga. अरे इसका योग में नहीं आ रहा, इसका योग है यार, इसको मिल गया अभी, luck also we use sometimes. तो योग में जब नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं साहब? कुछ नहीं कर सकते. आप जितना भी जोर लगा ले, अभी योग में नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते. ऐसा करके some kind of a Vedanta also everybody talks about when they can't sow grapes. And प्राप्त वस्तु रक्षणा, जो प्राप्त हुआ है ये शरीर, मानव शरीर, because जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ, because there are so many 84 lakhs different जीवराशि में मनुष्य जन्म प्राप्त करना बहुत मुश्किल से मिलता है. तो ये प्राप्त जो जीवन है हमें, उसका हम सही तरह से रक्षा कैसा कर सकते हैं? इसीलिए शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम. And what is the Kshema is about the protection of that particular body in order to pursue the dharma. And that's how I think we can synthesize. And sun god plays a lot of important role because he is the Pratyaksha Deva. So he talked about that. And tapam varsham amrutam mrutyu sat asat.
Lot of times we misunderstand that Trembakam Yajamahe Sugandham Pushtivardhanam Urvarukamiv Vandhanat Mrutyomukshi Yamamruta Mahamrutyunjay mantra on Mahashivaratri day everybody talks about. People think that it is a Mahamrutyunjaya mantra because it will take away the death away from you. Actually, if you see, understand the meaning of Trembakam Yajamahe, Urvarukamiv Vandhanat, it is like a ripened कीड़ा होता है जो अपने आप वो निकल के बाहर आ जाता है. लाइक दैट इतने आसान से मुझे इसका मुक्ति प्रसाद करो और मेरे को मृत्यु प्रसाद करो, यहाँ से मेरे को ये बंधन से लेके जाओ करके इसका अर्थ है. बट वेरी ऑफन वी थिंक दैट मृत्युंजय का मतलब है कि दैट लेट मी नॉट हैव डेथ एंड ऑल, तो डेथ आसान करो मेरे को. दैट्स व्हाट इज द पर्पस एंड द मीनिंग ऑफ द महामृत्युंजय मंत्र. So when that is that, and hence God is saying, Leena ji asked the question, ये मृत्यु भी बोल रहा है भी बोल रहा है. Like Vivekananda said, we were not dead people, like we are all sinners and somebody's blood should come and then purify us and all those kind of. हमारा सनातन धर्म वैसा नहीं है, किसी का ब्लड की जरूरत नहीं है. हम लोग शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रः. That's what Vivekananda has also proclaimed, a clarion call he has given. Don't think that you are all sinners. You're all Divyatma Swarupas and then you are born with a divinity and then you were always Amar and a transitory kind of a thing. Even a Swarga, there are several Swargas. And like Abrahamic religion, there is only one Jannat and then we talked about 72 hoors and then only 72 hoors. And that's what the life is over. That is a pleasure seeking kind of a thing. Whereas we have Janoloka, Tapoloka, Maharloka, Brahmaloka, Yaloka, Voloka, like there are so many Bhuva, Suva, like that, Maharloka, Janoloka, like that, there are several lokas beyond Swarga. It is like a bank deposit. And then even if it is like a 5-star hotel or even a resort or a Switzerland we go when rich people and they enjoy luxury experience. But that is not experience. Once the show is over, you will have to vacate the theater and then come out. When the bank account is over, when you do not have balance, the bank manager will ask you, "Sahab, nahi hai, khatam hai," they will deny, and then you will have to go back and then you will have to redeposit. Similarly, a star hotel also they will drive you away. But when you are there, "Sahab, yes sir, no sir, 3 bags full sir, ye bhi karu, wo bhi karu," all that they will do that. Even in the job also, when you are sitting in the chair, जब तक आप कुर्सी में बैठे रहते हैं तभी तक आपका साहब बोलते हैं once you retire like me or when you leave the job like me, देन कोई सलाम भी नहीं ठोकेगा. जितना भी तुम बड़ा पोजीशन प्राप्त करो, तो ये अप्राप्य वस्तु एंड देन प्राप्य वस्तु का रक्षण भी करना. लेकिन जो हमारे साथ हमेशा रहता है वो भगवान का ये होता है. दैट इज व्हाट इज द भक्ति. एंड देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ भक्तिस एंड देयर आर सेवरल थ्रू एग्जांपल्स वी कैन अंडरस्टैंड. लाइक फॉर एग्जांपल we have got several examples like रुक्मिणी का भक्ति अलग है, लक्ष्मण का भक्ति अलग है, हनुमान का भक्ति अलग है, विभीषण का भक्ति अलग है, प्रहलाद का भक्ति अलग है, गोपिका का भक्ति अलग है. सब भक्ति है लेकिन all of them the common thing is ananya chinta, ananya or even here it is saying it is not like la ilaha illallah. Either you believe in it or there is no other God. We don't say that. There is no other God. All gods are same and all gods are me. Even if you worship any other God also, it will come to me only because it is only one Ekam Sat Vipra about our religion. That is the fundamental difference between Sanatan Dharma and then the other non-Sanatani Abrahamic religion. It's not like La ilaha. We say that, everything is same. And that's where, even if you, either you follow me, you will get me. Even if you follow your Ishta Devata, jo bhi hai, that also, that puja also will come to me. He has said that in the previous other slokas also, and here is also. He is saying, and then it is beautifully proven. And last but not the least is, and my bosses used to say when I was growing up, very often used to, if you have to go to heaven, you have to die. So that means you have to work hard to get without the death, you can't go to heaven. So to go to heaven, you must die. That is the example he used to give. That's what, in management we also give. You have to. very often we use this. एक बार नाटकर्णी साहब क्या कह रहे हैं? बोलो. दरबार साहब को मैं विनंती कर रहा हूँ कि ऐसी बातें मत छेड़िए, हमको बहुत एंजाइटी आ जाती है फिर. जाने की बात मत कीजिए. हाँ जी, किसकी बात? जाने की बात मत छेड़िए, बोला मैंने. हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम. आप जिंदा रहो, जिंदाबाद नाटकर्णी साहब, जिंदाबाद. लेकिन ज्यादा सही ध्रुव मृत्यु जाना ही है सबको.
बट कुछ कहीं वो पहले जाते हैं, आपने कहीं आपने अपने बाद गुरुजी में की बात जो जाते कही हैं। है वो यहाँ देशी हाँ जो देशज भाषा है उसमें ये कहते हैं भाई स्वर्ग तो मरे ही मिलेगा। हाँ, वही तो ये सेम थिंग इंग्लिश आई सेड। So, but that's what people say that. But it is not about just enjoyment. Even if it is enjoyment, kshine punye machalokam visanti. That means you will come back. What is the situation with the poppies? Then where is the concept of hell? If you are only talking about heaven and then you come back to the earth, where is hell? So because here Babaji said, here he is talking about जो पुण्य कर्मा किए हैं उनकी बात कर रहे हैं। जो पाप कर्म करते हैं वो कहीं और नरक में भी बहुत सारे नरक हैं, जैसे स्वर्ग में बहुत सारे स्वर्ग हैं, नरक में भी बहुत सारे नरक हैं। there are several stages and forms and the punishment levels and hells also there are in our concept. That is the fundamental difference. And and अगर ये पाप भीति नहीं होती, अदरवाइज ऑलरेडी बिगड़े हुए हैं इंसान लोग ये भूमि पे, अगर इतना भी पाप भीति नहीं होता तो और कितना जानवर राक्षस मानव बन सकता है, आप इमेजिन कर सकते हैं। यही पाप भीति होता है, ये फिर से इधर आना पड़ता है। वंस यू नो दैट you will have to pay back, then you will be very responsible and careful in taking the loan or even taking udhar or even using somebody else's का दिया हुआ अप्राप्य वस्तु जो भी है, या जीवन हो या कोई भी मटेरियल चीज हो या कोई थिंग, बिकॉज वी मिसहैंडल इट and we abuse it, many of the world's problems are coming. I think it is opportunity for us through these 5 shlokas to understand the impermanence of the transitory things and the permanence of the Shashvata and then the Brahma Prapti. And Bhagavat Swarupa Prapti is the actual yoga. So it's not only Aprapti Vastu Prapti but also Bhagavat Swarupa Prapti, Swaswarupa Jnana प्राप्ति थ्रू साधना। उसके लिए करने वाला रक्षण जो है वो क्षेम होता है, यही योगक्षेम एंड इंटीग्रेटेड वेलबींग। इवन इन आवर जनरल लाइफ ऑल्सो विल हैव टू मैनेज एंड बैलेंस ऑल हमारा पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, साइकोलॉजिकल लाइफ, सोशल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ। दैट्स हाउ इट वर्क्स। थैंक यू। राइट। तो आपका जो वो था ना आपके गुरुजी वाली बात, इसमें बात एक ये है कि जिनको स्वर्ग नहीं चाहिए, जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए काम कर रहे हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती, वो प्रस्थान करते हैं। करेक्ट। ये डिफरेंस भी यहाँ है। इसलिए किसी को, हमारे व्यूअर्स में भी कोई यदि इस बात को लेकर घबराता हो सोच के, तो वो घबराए नहीं, उसको प्रस्थान मिलेगा फिर। करेक्ट करेक्ट। ठीक है। जो लोग करते हैं उनको ये मिलेगा, जो सकाम कर्म करते हैं उनको ऐसे these kind of luxuries will be temporary luxuries. बिल्कुल। एक और बात है, प्रोफेसर बलराम सिंह साहब कह रहे थे कि जो उस तरह के लोग हैं, मोक्ष प्राप्ति वाले जो लोग हैं, और उन्होंने वो योगी जी वाला एग्जाम्पल भी दिया, 0.00001% भी ऐसे लोग नहीं है जो मोक्ष की बात करते हो, स्वर्ग की ज्यादा बात करते हैं। लोग स्वर्ग में सीट रिजर्व कराना चाहते हैं कि भाई स्वर्ग में एक बार चले यार, 1000-2000 साल तो वहां रहेंगे और वापस आ जाएंगे, फिर देखेंगे और देखेंगे। तो ये चक्र हमारे यहाँ चलता है। इसीलिए तो हमारे यहाँ सब पुण्य के काम जिनको कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास में, वो नाम पट्टी लिखवाना, तो लोक और परलोक की जो बात है वो इस तरह से भी आती है कि लोक में यदि अच्छा करोगे तो परलोक में अच्छा मिलेगा। ये भी हमारा कॉन्सेप्ट है जीवन का। तो भाटे साहब स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी। So I have it advantage, because coming last, the advantage is that everything has already been explained, everything has already been discussed. So now I don't really have much to say as a fact. However, I will just mention a couple of points. To Nadkarni ji, he talked about today is Mahashivratri, and he talked about Shiva and all that. So let me just assure him that it has been my experience that when I go into trance, what I find is that there is only one single tattva, और वही तत्व भगवान श्री कृष्ण भी होता है और वही तत्व भगवान शिव भी होता है. So there is no difference between these two. And the only comment that I would like to make, लीना जी तो चली गई, हमको भी जाना है, so I will only make a little comment and then I need to leave.
क्योंकि फैमिली से बुलावा आ रहा है, तो आई हैव टू लीव. आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट आई हैव टू गो. द कमेंट इज दैट लीना जी ने बोला कि जब कठिन समय आता है तो भगवान की कृपा होती है. वेल, आई वुड ओनली कमेंट, आई कीप डूइंग दिस अनन्या चिंतयन्तो माम ऑल द टाइम, फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट. तो हमको तो मोमेंट टू मोमेंट, एवरी मोमेंट भगवान की कृपा मिलती ही रहती है. And the last comment that I would like to make is that I did for last 49 years and have had many experiences, spiritual experiences during the process of this sadhana. So it is my claim that गीता में ये जो कुछ बताया है वो सब सच है. And I am not saying this on the basis of belief. I am saying this on the basis of actual practical experience that I got during my sadhana. It's all true. This is exactly how it is, and I take every word of Bhagavad Gita verbatim. And that is why my claim is that this should be studied, this should be understood, people should try to learn from it, and that is my final comment. Is based on my actual practical experience, and not because I am a Hindu. Well, of course I am a Hindu, but that is not the basis of what I am saying now. Not because I was born in India. Oh, ठीक है, इंडिया में तो जन्म हुआ. It's not the point here. So यहाँ पे धर्म की बात नहीं आती है, यहाँ पे देश की बात नहीं आती है, यहाँ मीनिंग की बात आती है और अनुभव की बात आती है. सो अनुभव से मैं बता सकता हूँ कि लाया गया है all the verbatim, word by word, and that is why we need to study Bhagavad Gita. Right. My friend, and आपसे विदा लेता हूँ. Thank you so much. Thank you, sir. बिल्कुल ठीक है, आप अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिताएं, हमारी शुभकामनाएं हैं आपको. तो सेकेंड राउंड में प्रविष्ट हो जाते हैं विदाउट हैविंग एनी ब्रेक. और इसमें ये जो 84 लाख का जो हमारे जो दर्शन परंपरा में है 84 लाख योनियों का जो है स्पीसीज का जो मामला है, इसको हम प्रोफेसर बलराम सिंह जी के सामने रखेंगे. 82 लाख स्पीसीज तो मॉडर्न साइंस भी मान रही है. अब ये बात अलग है कि 2 लाख हो सकता है, अब हो भी नहीं, क्योंकि हमने जहां से बात पकड़ी है वो पुरानी बात है. तो ये भी क्या बात सच है, क्या मॉडर्न साइंस क्या कहती है, ये भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. लेकिन सेकेंड राउंड है, ब्रीफ राउंड रखेंगे और आचार्य जी के पास चलते हैं. जी आचार्य जी. Quickly take the 23rd verse, which is again a very important verse here. Now here Bhagwan is talking about, he says that, whoever you worship, मतलब आप जिस भी तरीके से वर्शिप करते हो, it comes to me. Now let's look at the bigger picture here. When we talk about Ishvara, when we talk about his power, Prakriti. So through Ishvara and Prakriti, when we look at the different avatars, they are also Ishvara. Then he becomes apparent as all the avatars. He becomes apparent as the 32 crore Devi Devtas. He becomes apparent as Brahma, Vishnu, Mahesh. Now when we talk about the 32 crore Devi Devtas, इसमें एक confusion जो बहुत बड़ा है, जो सब लोग पूरी दुनिया जानती है कि confusion है. 32 कोटि कहा गया है, तो वो 32 कोटि में whether it is only 32 crore को कोटि कहा गया है या फिर it is only 32, and somewhere also it is mentioned that it is 8. Now I will leave it. नहीं, वो दरबा साहब ने जैसा कहा ना, संस्कृत में शब्दों के जो अर्थ हैं, उनके जो अर्थ हैं वो इस तरह से हैं. कोटि कोटि में यदि एक कोटि को यदि हम लेते हैं तो एक कोटि का अर्थ होता है करोड़ और दूसरी कोटि का मतलब होता है प्रकार. तो यहाँ हमारी वैदिक परंपरा से तो जो बात स्पष्ट है वो यही है कि 11 रुद्र हैं, इतने वसु हैं, ये मिलाकर 33 होते हैं. तो 33 करोड़ नहीं है बेसिकली. तो वो ये बहुत बड़ा एक लंबा डिस्कशन का पार्ट है. नहीं, वो होता क्या है कि जब लोक के अंदर लोक में यदि प्रचारित हो जाती है इस तरह की बात, तो फिर उस मिथ को, उस एक मिथ्या चीज को मिटाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक चीज को यदि आप 1000 बार कहेंगे तो वो सच होने लग जाती है. और यहाँ तो करोड़ों बार कही जा रही है.
एग्जैक्टली। और हमेशा एक सिद्धांत और है कि जो खोटा सिक्का होता है, खोटे सिक्कों की यदि भरमार हो जाती है तो वो असली करेंसी को भी खा जाते हैं। यस, तो इसके लिए हमारे जो ऋषिकेश, सिंस ऋषिकेश इज अ हब ऑफ ऑल द ज्ञानीज, सो आई एम गोइंग टू गिव यू डिफरेंट व्यू पॉइंट्स दैट पीपल हैव देयर। अब कुछ ज्ञानी लोग ये कहते हैं क्योंकि इतनी सारी इच्छाएं हैं आपकी, कि 32 करोड़ इच्छाएं हैं आपकी, तो भगवान ने 32 देवी देवता बनाए हैं फॉर ट्रबल शूटिंग। आपकी एक एक इच्छा के लिए एक पर्टिकुलर देवी देवता को बिठा दिया गया। सो सिंस यू हैव सो मेनी, दे विल टेक कोटि एज crore there and they will say the 32 crores है। अच्छा, ये चीज हम वहां पर भी देखते हैं। If we go to that temple there in Jammu, I forgot the name, they have got 32 crore pindis there, वो बनाई हुई है उन्होंने। Now see, I am not going to get into this debate here now, but okay, if we look at it as 32 crore or we say the 32 devi devtas, that there is troubleshooting, okay, this is very clear। तो एक एक अलग अलग डिपार्टमेंट दिया गया है। व्हाई? बिकॉज एवरी इच्छा, एज यू नो, जस्ट लाइक ट्रबल शूटिंग के लिए होता है कि अगर आपके नलके में प्रॉब्लम है तो आप इलेक्ट्रिशियन को नहीं बुलाओगे, आप प्लम्बर को बुलाओगे। सो सिमिलरली ट्रबल शूटिंग के लिए, सपोज यू गॉट अ प्रॉब्लम विद योर शनि महाराज, आपकी शनि की दशा में कुछ गड़बड़ चल रही है, तो आप हनुमान जी की पूजा करेंगे जा करके। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपने कोई नई व्हीकल लिया हुआ है, बिकॉज ही इज इन चार्ज ऑफ the vehicles and he's given that particular charge, तो ये particular charge के लिए different देवी देवतास are there। Now इसमें क्या भगवान, what is Bhagwan trying to say here is that those देवी देवतास are there for that particular charge। Why? Because of your own इच्छा, क्योंकि आप लोगों की इच्छाएं बहुत है, तब आप उस पर्टिकुलर देवी देवता की पूजा करते हो। बट इवेंचुअली दैट पर्टिकुलर देवी देवता की जो पूजा है, दैट कम्स टू मी ओनली, जस्ट लाइक द रेन वाटर अलग अलग स्ट्रीट्स में से होकर के, गलियों में से, नालियों में से होकर के इवेंचुअली इट रीचेस द ओशन। सिमिलरली यू इग्नोरेंटली, अविधि पूर्वकम जो यूज कर रहे हैं वर्ड, दिस इज दैट अविधि पूर्वकम जो भी तुम कर रहे हो, इट इज गोइंग टू इवेंचुअली कम टू मी। व्हाई? बिकॉज आई एम exist, I am the one who is existing as those, they do not have any individual status without me। लेकिन तुम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो by saying that I am going to worship this particular devi devta and not you। So here he says that when you try to worship Ishvara without any desires, then it goes to Ishvara only। But when you have a particular desire and you worship a particular devta, then it is going to, through that devi devta, it is going to Ishvara alone। So that path is going to be there। Now he says that अब भक्ति के पाथ्स अलग अलग हो सकते हैं, भक्ति के वेज अलग अलग हो सकते हैं, देवी देवता अलग अलग हो सकते हैं, बट इवेंचुअली एनीथिंग, एनी कर्मा which is done towards Bhagwan is going to reach Bhagwan itself through any ways, through any mode। That is the meaning of the verse here। Now one more thing I want to mention here is like BALRAM Singh ji mentioned that, you know, acharyas and all are given this particular you know, we are in charge of taking care of the dharma। Yes, BALRAM Singh ji, we are in charge of taking care of this dharma, and fortunately we did not choose to be acharya, but it is given as a responsibility by our gurus that yes, for the prachar of doing dharmas we should be made acharyas। I myself was at the age when people were looking for jobs. I had kicked my job in a foreign country and I had come and entered the ashram, so it's more than half my age from the time I'm studying and got into the process। Another answer to Sharma ji is that Sharma ji, मोक्ष के बारे में बहुत लोग बात करते हैं। It's not 0.1%। पधारो सा कभी हमारे यहाँ आकर के देखिए ऋषिकेश में, मोक्ष की बात ऐसे होती है जैसे आप रोटी गिनने की बात करते हैं या आप आलू प्याज की बात करते हैं। 140 करोड़ का देश मान लीजिए, भारत की बात करते हैं हम, ठीक है? 140 करोड़ का देश है, 7.5 अरब की बात नहीं कर रहे, वो तो बाद की बात है। फिर 140 करोड़ में से आप कितने लोग मानते हैं आपके हिसाब से? भाई अब उस रेशियो को देखिए, हमारी तो पूरी दुनिया ही यही है तो हम तो इसी यदि को 14 लाख लोगों को इकट्ठा कर लो ना आप ऋषिकेश में, हाँ जी, तो आपके कनखल से लगाकर मेरठ तक आ जाएगी भीड़। हाँ ये तो ठीक है। तो आप यूं देखिए इसको, बात को,
वहां 14-15 हजार लोग हो सकते हैं जो उसकी मुमुक्षु बनकर जाते हो, तो वो पॉइंट ही आएगा। 140 करोड़ का देश है साहब। नहीं सर, गिनती करेंगे अगर आप स्पेसिफिकली तो उस परसेंटेज पर पहुंच जाएंगे, लेकिन वैसे अगर हम देखेंगे कि अगर हम अपनी दुनिया की बात करते हैं तो हम जिस दुनिया में रहते हैं यहाँ तो हर एक इंसान मोक्ष के बारे में ही बात करते हैं। वो ठीक है, उससे हम इनकार नहीं कर रहे ना। हम आप देखिए ना 0.0000001 में भी लाखों लोग होंगे, ये कह रहे हैं। यस, तो वैसे मैं आई जस्ट वांट टू से दैट इट्स नॉट दैट पीपल डोंट टॉक अबाउट मोक्षा, बट अ लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट मोक्षा। दे टॉक, बट उसका एफर्ट करना, उसके लिए प्रयास करना, उसके लिए जो बताई गई है हमारे वैदिक विधि है उसको अपनाना और उसमें सतत क्रियाशील रहना, उस योग को अपनाना जो योग इसके लिए बताया गया है, उन लोगों की यदि गिनती करेंगे तो वो मोक्ष का मार्ग चुनने वाले लोग बहुत कम हैं। और संत परंपरा में भी हम जा सकते हैं, वहां पर भी आपको उनमें भी यदि आप सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा ग्रेडेशन करेंगे तो छलनी छलकर एक मतलब सैकड़ों की संख्या में लोग आ जाएंगे बस। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल सही है। अगर हम गिनती करते हैं तो यस डेफिनेटली वील रीच दैट परसेंटेज। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप उस मार्ग पर चल पड़े हैं। बात ये है। लेकिन शर्मा जी, अब हम अपनी बात करेंगे तो हमें तो उसके अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। हमारे तो देखिए, जैसा व्यक्ति होता है ना, वो व्यक्ति उसी तरह का संसार देखता है। यदि आप अपने हिसाब में अच्छे आदमी हैं तो आप दूसरों से भी अपेक्षा करेंगे कि वो भी अच्छा होगा, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं। जनरली ऐसा होता है कि आप तो उपकार कर रहे हैं, लेकिन अगला जो व्यक्ति है वो आपके ऊपर अपकार कर रहा है, वो आपके खिलाफ हो जाता है। तो ऐसा है कि जैसा व्यक्ति होता है उसका नजरिया वैसा ही होता है। जिस तरह का वो बनता है व्यक्ति, जिस तरह से वो सीखता है, जिस तरह के उसको संस्कार होते हैं, वो संसार में उसी तरह से बिहेव करता है। कई लोगों को आपने सुना होगा कि फला व्यक्ति तो यार भोला है, उसको कुछ आता जाता नहीं है। भाई भोला नहीं है, उसको संस्कार ही ऐसे ही मिले, अब उसको आप भोला मान रहे हो, तो वो वाली बात हो जाती है ना। आपकी कंडीशनिंग क्या है, आपकी प्रोग्रामिंग कैसी है, ये होता है इसमें सारा का सारा खेल। तो आप जैसे हैं, आपको तो ज्यादातर लोग ऋषिकेश में मोक्ष की प्राप्ति के लिए दिखते होंगे, लेकिन वहां आश्रम बनाने और पैसे कमाने भी बहुत लोग जाते हैं। कंठी माला का जो अटायर है वो भी पैसे कमाने का जरिया है कईयों के लिए। ऐसा नहीं है कि सारे लोग मोक्ष मार्गी हैं, कई लोग धन मार्गी भी हैं। तो वो योग क्षेम के लिए भी जाते हैं। बहुत है। नहीं, what I want to say is that when we entered the ashram, तो आपकी बात अलग है। आप देखिए आपके आश्रम में कितने लोग होंगे? ज्यादा तो नहीं है, फिर भी मतलब जितने लोग जुड़े हुए हैं आश्रम से वो काफी है, वो तो काफी ज्यादा है जुड़े हुए। तो एक ऐसा है, देखिए किसी भी गुरुजी से दीक्षा लेने वाले तो लाखों लोग हो जाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मोक्ष प्राप्ति है उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। हम उनकी बात नहीं कर रहे जो बातें करते हैं। मोक्ष की बातें करना आसान है, लेकिन उस मार्ग पर, जैसे विवेकानंद जी की बात अभी चली थी, विवेकानंद जी को 3 बार ऐसे मौके आए कि वो जो कुछ चाहते थे वो चाह सकते थे, मांग सकते थे वहां पर, लेकिन उनकी कंडीशनिंग नहीं थी, उनकी प्रोग्रामिंग ही उस तरह की नहीं थी, संचित कर्म उस तरह के नहीं थे। श्रुति जो जिसको प्रोफेसर बलराम सिंह साहब कह रहे थे, वो श्रुति वो थी नहीं उनमें, वो प्रारब्ध ही नहीं था उनका। तो वो कैसे मांग लेते? मांगना तो तब होता जब उस तरह का प्रारब्ध होता। शर्मा जी, एक्चुअली जब हम लोग आश्रम में आते हैं ना, तो वी कम फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम लोगों को इतना ज्यादा पकाया जाता है, यू नो, वी आर गिवन दैट हीट। इमेजिन कीजिए इतनी ठंड में 4 बजे सुबह उठ करके पूरा साल हम लोग गंगा स्नान करते थे, एंड ऊंची आवाज में वैदिक चैंटिंग यहाँ पड़ती थी, एक बहुत तेज इधर पीछे सर पे, and in a loud voice we used to chant in the morning, and the whole day if we come back to the room, then again we have to take a bath and go back to the class from morning 4 o'clock till 9 o'clock in the night. हमारे पास और कोई काम नहीं होता था सिवाय पढ़ने के और पढ़ाने के, चैंटिंग करने के, जप करने के, भक्ति करने के। इट्स नॉट इजी टू डू। सो आधे लोग तो भाग ही जाते हैं। मतलब the time when my batch started, There you are. You have yourself justified my logic. Yes. I'm saying that when we started, can I just started, go ahead.
Yeah. Yeah. You know, actually, what Sharma ji and Acharya ji are talking, a beautiful example of this good and bad is Yudhishthir and Duryodhana example. Lord asked Duryodhana to go and find a good man, and he asked Yudhishthir to go and find a bad man. Both of them return empty-handed, saying, I could not find what you asked me to get. Because उनकी जो प्रवृत्ति थी, उनके जो भाव थे, गुण थे, conditioning थे, that is one point. But more importantly, I want to thank Balram Singh ji for his comment on yin and yang. I want to clarify that I did not say that it is wrong or inappropriate. I was merely cautioning against its blanket use in verse 19. In essence, I am talking about binary thinking, which is, you know, like what we are discussing also, which is by definition thinking that there are two sides and you can only pick up one. This is also known as dichotomous thinking, or a way of thinking that becomes simple for us to process complex ideas and situations. But we need to be hugely aware that the gray area in the middle of these complex issues is often ignored or goes unnoticed. That was my point. So why are we humans so prone to binary thinking? Because it helps us feel a sense of certainty in an essentially complex and chaotic world. And you will agree with me that uncertainty of complexity can be very scary and anxiety provoking. So it is no wonder that people fall into this category of binary thinking, especially when they face uncertain times like what Arjuna was facing at Kurukshetra, or that we are facing today, you know, in terms of war or pestilence or, you know, economic meltdown and so on. And that is the point about my about quick or impulsive judgments based on binaries of yes and no, because they help us. While they help us move towards clarity, they also certainty. They also go away from clarity. A very striking example of this polar approach comes from older times in the philosophy propounded by the Iranian prophet Mani. Now, Manichaeism is based on a rigid dualism of good and evil, locked in eternal struggle. That was what I was talking about. Another modern example is double-faced evocation of reality that the late Hungarian writer and activist Arthur Koestler talks about. And his famous novel is Darkness at Noon. What I was talking about, you know, darkness at noon in Rajasthan desert at the time of solar eclipse. Now, he evokes Janus as the Roman god of doorways in a very interesting way. He says that at a doorway, you have an inside and also an outside. So there is a face that is looking inwards and also outwards. And he says that binaries talk about a transcendent philosophy of holons. Now, a holon, he argues, is both a part and a whole. Jivatma and Paramatma, if I can take a rough example. Every holon is also depicted as a two-faced Janus. So, one side looks down or inward, the other side looks up or outwards. Each holon is part of something greater, like the Parabrahman. So, this Atman being part of the Parabrahman. Each part is in its own way organizing the whole to the elements that constitute this entire whole. This 33 crore and beyond that we are talking about. So, Koestler argued that in every healthy system, in the human body, chemistry, philosophy, or whatever, you can look profitably at groups and elements in this way, of holistic philosophy, which Darbha also talked about. And the spelling is not W-H-O-L-E, but H-O-L-O. Holon, that it comes from a Greek-Roman word. Thank you. Right, sir. तो बलराम सिंह साहब थोड़े समय का भी ध्यान रखेंगे,
ब्रीफली रखेंगे, टाइम इज आउट ऑलमोस्ट। जी जी, आपने सवाल जो पूछा, मैं सोच रहा था कि मैं आज बादशाह की जगह साथ साथ शहंशाह भी बनूंगा, कि जिस व्यक्ति के अंदर सहनशीलता होती है वो शहंशाह होता है। तो जब अभी दो लोग तो सहन नहीं कर पाए, चले गए, तो शहंशाह नहीं हो सकते हैं। अब जो बचे हुए हम ही लोग शहंशाह हैं। सहा गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु नहीं जी चाहिए, वही शहंशाह। जी 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 जी। तो दूसरी बात मैं ये कह रहा, आपने सवाल पूछा है वो 8.2 लाख और 8.4 लाख 84 लाख योनियों की, एक्चुअली रियल नंबर जो है वो है, साइंटिफिक वर्ल्ड जो आज एक्सेप्ट करता है, वो 8.7 लाख है। 8.7 मिलियन, व्हिच मीन 87 लाख स्पीसीज हैं अभी आज। तो मतलब हमारे से भी ज्यादा चली गई है तो संख्या हमारे यहाँ ज्यादा मानते हैं, अभी साइंस वाले 87 मानते हैं, क्योंकि तो स्पीसीज बनती भी तो है जब ये लिखा गया होगा। हाँ, तो हो सकता है उसमें, क्योंकि स्पीसीज तो इवोल्यूशन की प्रोसेस होती है, तो इसलिए। लेकिन ये इट इज अमेजिंग कि वो लोग इतना सोच सके, और बहुत सारी जड़ी बूटियों का, पेड़ पौधों का, जानवरों का, जो वाल्मीकि रामायण में भी अगर देखें जो व्याख्यान दिया गया है, या कि सारे संसार का वाल्मीकि रामायण बताते हैं, वो कि अमेरिका क्रांच प्रदेश है और पोलर तक सुग्रीव बताते हैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे। अमेजिंग। वो जो आजकल उस पे चल रहा है उनका सुग्रीव एटलस जो है, वो उससे हालांकि कई चीजें भ्रांति भी है उनमें, लेकिन हाँ ये बात जरूर आपकी कि हमारे जो पुराने जो द्वीप बताए गए हैं, और जो जिनको हम अफ्रीका का, या ये जो जिनको हम महाद्वीप कहते हैं, इनके बारे में ऑलमोस्ट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये वो जो उदाहरण लाते हैं वो आइस एज का, और उसमें कंफ्यूजन बहुत है उनकी थ्योरी में, वो मैं नाम बोल रहा हूँ उनका, अमेरिका ही रहते हैं शायद। मैं सुभाष जी, कंफ्यूजन तो हमारे खुद के रिसर्च में है, जो मैंने अपने आप किया हुआ है और 10 साल पहले किया हुआ है। आज के जो उसमें देखते हैं तो बहुत कंफ्यूजन होता है, तो दैट इज पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा आई डोंट थिंक वी नीड टू वरी अबाउट दैट। वो जैसे अभी बोल रहे हैं ना नतकर्णी जी, के लोग बाइनरी कर देते हैं, बिकॉज दैट्स अच्छा बुरा कर दिए, ये अच्छा है, काला अच्छा है, सफेद बुरा है, जो भी जैसा करना चाहता है, बिकॉज दैट्स आवर लिमिटेशन। बट ये प्रोसेस तो नहीं बंद होती। अनंत का नाम ही जो भगवान का नाम दिया गया है वो अनंत कहा जाता है, मैथमेटिकली स्पीकिंग दैट इज ट्रू। अनंत मतलब भगवान का, जो कुछ हमको समझ में नहीं आता भगवान बोल देते हैं, बिकॉज वी डोंट नो दैट। एंड दिस इज अ नाइस वे टू से। द प्रॉब्लम है जो लोग बोलते हैं भगवान अब ये करेगा, ये गलत है, क्योंकि वो भगवान बैठ के कोई कुछ नहीं करता है। आपको समझने की बात है, जो कि भारत की बड़ी परंपरा रही है कि ये वर्णन हर चीज को एको हम बहुत श्यामी करके तरह तरह की बातें करते हैं। नाउ डॉक्टर दर्भा वाज टॉकिंग अबाउट कि अब्राहमिक में सिर्फ एक ही, हमारे यहाँ बहुत सारी हैं। ये प्रॉब्लम हो गई नाथकर्णी जी, आप बोल रहे हैं हमारे यहाँ तो बाइनरी चाहिए सभी को, और ये हमारे यहाँ बता रहे हैं 15 तरीका, ये स्वर्ग वो स्वर्ग। अरे इससे अच्छा भैया माथा क्यों खपाना है, एक वाला है वो मिल जाएगा। दूसरा ऐसा और भी मार्केटिंग की आइडिया है कि अगर वहां नहीं गए तो हेल में जाओगे, मतलब मार्केटिंग वाले यही बोलते हैं आज ले लो जो लेना है, नहीं तो कल को नहीं मिलने वाला कुछ। तो एक्चुअली आपके बिजनेस वाला काम इन लोगों ने जबरदस्त पकड़ लिया है, जो इनके हिसाब से, इनकी सोच के हिसाब से हेल इज वेयर यू आर गोइंग टू बर्न फॉर एवर, एंड स्वर्ग में आप 72 हूरे मिलेंगे, जो भी यहाँ पे भी लिखा हुआ है एंजॉयमेंट करोगे, जो भी वट एवर दैट यू नीड टू टॉक अबाउट। तो बात यह है कि हाउ इनके यहाँ जो है कि भाई आपके यहाँ पे हमको 7 जन्म लेना पड़ेगा, उनके यहाँ एक ही जन्म है और इसमें ऐसा हो जाएगा, इसमें ऐसा हो जाएगा। जब तक हम ज्ञान नहीं बढ़ाएंगे लोगों को कि ये वैसे मैं कई जगह डिक्लेयर किया हूं कि आई गारंटी हेवन कि $99 में गारंटी, मनी बैक गारंटी। अगर नहीं हेवन गए तो वापस आओ, अपना ले जाओ पैसा। तो अगर वो किसी ने बोला कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता, वो मर गया तो कैसे आएगा, मैंने कहा उसका बेटी आके बोले कि हमारे पिताजी को, माता जी को स्वर्गवास नहीं मिला है, मैं दे दूंगा। आज तक कोई व्यक्ति नहीं कहा है कि मेरे पिताजी को नरकवास हुआ है, सारे लोग बोलते स्वर्गवास हुआ है। तो मतलब आई वांट टू रन अ बिजनेस कि चलो ये पैसा लाओ, गारंटी स्वर्ग, मरने के बाद सबको स्वर्गवास हो। एक चीज नहीं है, 1 मिनट में रोक रहा हूं यहां पर, एक चीज नहीं है, इसको आप हो सकता है कि उनसे मिलाकर और इसको थोड़ा लाइटली ले लें हम कि उनके यहाँ भी व्यवस्था है, हमारे यहाँ पर भी व्यवस्था है। एक चीज वहां पर नहीं है जो केवल और केवल आपके पास में है, वो है मोक्ष। दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट देयर। Absolutely. If it is a concept, if it is a concept.
हाँ जी, हाँ जी, मैं सोचता हूँ कि मोक्ष भी मरने के बाद सबको मिल जाता है। अब वो दूसरी बात है कि क्योंकि मोक्ष का मतलब होता है कि नो डिजायर लेफ्ट। जब ये सारी डिजायर जो हैं हमारे यहाँ पे हैं, हमारे कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों से हैं, साइंटिफिकली आप इसलिए भी इस वो बात को created मानते नहीं हैं कि साइक्लिक सिस्टम ही है जो इस सबको चला रहा है। जी। यदि हम कंपेयर करें, बाइनरी खड़ी करें, तो वहां पर ये साइक्लिक को मना किया जाता है। वो कहते हैं कि एक ही बार होता है सब कुछ, दोबारा कुछ हाँ होता ही नहीं। हाँ, वो ये असल ये में नया ढंग है, ये वो मार्केटिंग अद्भुत वाला चीज है। भी तो हमारे पास है, हमारे ज्ञान परंपरा में ये ये भी तो डॉक्टर अद्भुत चीज है। ये चीज कोई जरूरी नहीं। देखिए, जीसस क्राइस्ट भी इस वो मानते थे, पहले जमाने में क्रिश्चियन लोग भी मानते थे पुनर्जन्म, लेकिन बाद में मार्केटिंग वाले जुड़ गए हैं। तो ये सब मार्केटिंग की बात है। अगर आप सही सही बताओगे, अमेरिका में 35% पीपल बिलीव इन रीबर्थ। अमेरिका में, यहाँ पे 35% हिंदू नहीं है, ये क्रिश्चियन है, दे बिलीव इन रीबर्थ। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं। तो मेरा कहने का मतलब लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि समय बीतता जा रहा है, जो सोम, बिल्कुल एक गया यहाँ पे समय। सोम की बात हुई, सोम की जो बात हुई है वो भी जानना जरूरी है। क्योंकि जो एक सोम जो होता है, आजकल यहाँ पे कुछ एक तरह का मशरूम भी है, लोग उसको कंज्यूम करते हैं एंड देन दे बिकम एक्सटैटिक, और उनको यहाँ की चीजों से मुक्ति मिल जाती है। तो सोम रस का मतलब है दिस इज अ वे ऑफ गेटिंग बियॉन्ड योर सेंसेस एंड देन जो भी रियलिटी होती है, अभी उसको लोग मदिरा बोलते हैं, वो भी एक तरह से हो जाता है लोगों को। लेकिन ये कि वही वाली बात, हल्के में ले रहे हैं ना सब चीजों को। वो ठीक कह रहे हैं आप। जी। नेक्स्ट टाइम झा साहब आ जाएंगे तो सोमरस के ऊपर थोड़ा सा और कर लेंगे। जी। दरबार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए सर, 1 मिनट। Okay, quickly to first of all, there are 33 Koti Devatas. That is, Koti is a type which we have discussed, and which are like Dwadasa Aditya, Ekadasha Rudra, Ashta Vasu, and 2 Ashwini Devatas. All put together are 33. So it is 33 different types, not 33, 330 million or 33 वो Koti तो crores. वो And जो all. लॉजिक है ना, वो Second, वैसे ही खत्म है, क्योंकि 33 करोड़ यदि होते हैं तो वेदों में उनके नाम आते हैं, नाम नहीं है। correct. So that is बिल्कुल। one thing. Second thing, which we are talking about, like sometime back we hear only in this episodes we discussed that काश्यांतु मरणान मुक्ति, अगर काशी में मर जाए तो मुक्ति मिल जाता है, because मोक्ष की जब बात करते हैं तो then 14 million, whatever, I don't know what is the population, अंदाजा से people who are living in Benares, out of which there are 28% Muslims are also there. They never think about भोले और भगवान और शिवा, उन सबको भी मुक्ति है तो वहाँ भीड़ हो जाती है और मोक्ष. So I think we are taking several things lightly here on a light-hearted manner. So emotion, if that is true, then then it applies to Rishikesh and then Delhi, Bangalore, वेद Chennai, इसकी साक्षी and नहीं all. करता है। ये जो Correct. लौकिक धारणा है, इसकी वेद साक्षी नहीं देता है। Correct. So and again, it is about अपनी, ख्याल अपनी, like जैसे वो अपना अपना हिसाब every episode भाटे साहब बोलते रहते हैं कि मैं समाधि में जाके आता हूँ, ऐसा करके बोलते हैं, ये उनकी ख्याल है। तो समाधि क्या होता है, जब पढ़ते हैं हमें मालूम है व्हाट इज द समाधि स्थिति क्या होता है, जो उधर जाते हैं वापस आते हैं क्या, ये वीकली शो नहीं है जो जाके आ जाते हैं। सो इट इज लाइक दैट, बट उनका फीलिंग है, खुद का फीलिंग है। जैसे कि मैं भी मान सकता हूँ, मैं ऑलरेडी मोक्ष प्राप्त कर लो, मैं ज्ञानी हूँ, इधर बैठा हूँ, तो ऐसा मैं अगर बोलूंगा तो अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूँ, वो होप कैनॉट बी स्ट्रेटेजी, विश कैनॉट बी द अचीवमेंट. So that wish is a good wishful thinking. Right, but if right. I keep saying that I am already prime minister, then people think that my soundness of the mind, people will imagine. You are Brahman. No. I know, I am Don't Brahmasmi make a करके मैं joke बोल of के, this. while it is true, you are actually divine. No, please. You see, I know that, वो चर्चा के लिए चले जाएगी। सभी दिव्य आत्माओं को, सभी दिव्य आत्माओं को मैं अभी विराम दे रहा हूँ। नमस्कार। ये आपने सुना, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। और आज के हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ी हुई आचार्य राधा जी, श्रीमान विठल जी नाडकर्णी, प्रोफेसर श्रीमान बलराम सिंह जी, प्रोफेसर श्रीमान अनिल जी भाटे, प्रोफेसर श्रीमान श्रीराम जी दर्भा और श्रीमती लीना जी मेहंदले। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम गीता उपनिषद जिज्ञासु की दृष्टि में। आपने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।